सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य निर्णायक मंडल, समुपस्थित मम भ्रातृ भगिन्यश्च अहम् इदानीं भवतां समक्षे विश्व शान्तिर आधार इत्यस्मिन् विषये वक्तुं कामस्मि। सः प्रथमा संस्कृत विश्वधारा अर्थात् श्रेष्ठ यादव आर्यवर्ते परमपिता परमात्मा स्वपुत्रान् दृष्टान् कृतुं यद् वेद ज्ञानमयं संविधान उपदृष्टवान् तस्माद् वयं संस्कृतिर प्रादुर्भूता अत ऐविषः विश्ववाला प्रथम वैदिक संस्कृतिर विख्यात सैव च भारतीय संस्कृति नाम्ना अपि जगप्रसिद्धः वैदिक संस्कृति पदे पदे जनान् सुशीलं कृतुं क्वचित् वृतं यत्तेन संरक्षयन् परद्रव्येषु लोष्टवत् क्वचित् इदं न मम परिमाग्ने दुश्चरितात् बाधस्वमा सुचरिते भज इत्यादिनं प्रबोधयन् मानव प्रवृत्ति विक्षेतान् चतुर्षु वर्णेषु विभज्यते तद्यर्थ वेदोवाच ब्रह्मणो मुखमासीत् बाहुरजन्ये किता उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्यां शूद्रो जायतः अर्थात् ब्राह्मण मूर्धेव ज्ञान विज्ञाने अज्ञानम् अपसारि राष्ट्रं रक्षति क्षत्रेण स्वशौर्येण ब्रह्मकर्मणे रक्षं पाति वैश्येन धन्यानादि व्यापारी राष्ट्रं संबध्यते तथा च शूद्रः शारीरिक श्रमेण राष्ट्रं सेवते। अद्य धारा निराधारा निरालंबना सरस्वती वर्णानाम भावे विनिष्टाम हेति वही अतः आवश्यकता परिवर्ती विश्व व्यवस्था पुनः वर्ण व्यवस्था पुनः प्रतिष्ठापिता स्यात् येन विश्वस्मात् अराजकता भ्रष्टाचार शोषण आदि विश्व विनाशक तत्वानि यायु उद्देश्य इदं वदार्य वैदिकी संस्कृति मानवस्य गर्भतः निर्माणं कुर्वन् षोडश संस्कार माध्यमेन मानव जीवनस्य समोन्नति येन मानव जगति शारीरिकम् आध्यात्मिकीं वैज्ञानिकीं च उन्नति कुर्वन् मानव जीवनस्य चरम उद्देश्य पुरुषार्थं चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्षं साधयेत। वस्तुतः वैदिक संस्कृति जगदात्मा वर्तते यस्य भावे क्वचित् मृत शरीरं भासते यस्य भावे क्वचित् बाला दुष्यन्ते धनानि लुठ्यन्ते क्वचित् रुधिर द्वारा क्वचित् विश्वयुद्ध सद्य इत्ययं समस्तो अपि लोक भौतिक चाकचक्ये अपि वै मनस्यानलै दण्डयमानो त्राहि मम त्राहि ब्रवन् भारतं वीक्षते यत्र परम पवित्रा वैदिक संस्कृतिः मातरेव सुअवशिशून् पाति सत्यमेव वक्तं यत् विश्वं भवित्येकनीडं संस्कृतवेषा मानव जीवनस्य मंगल कर्तुं चतुर्षु आश्रमेषु विभज्यते तद्यर्थः ब्रह्मचर्यो गृहस्थश्च वानप्रस्थाश्रमः सन्न्यासश्चात्र निर्दिष्टो जगद्रक्षण हेतुनः यदा बालिका समेत वाणी सन् गुरुकुलमुपगच्छति ब्रह्मचारिणः उपनयमानो कृणोते गर्भे मन्ता इति स्वः गर्भे विविध विद्या विद्यालयं सकल कलाकलापं प्रशिक्षय श्रेष्ठतम नागरिकं राष्ट्राय पृच्छन्ति। आचार्यस्य विषये चाणक्येनोक्तं शिक्षकस्यां प्रलय निर्माणो क्रीडतः परम हंत विश्वविद्यालयेष्वद्य स्वार्थचिन्तः वेतनैक्तानो धननोलुपं शिक्षकवर्गश्च छात्रान् दुष्टकर्मसु प्रचोदयति येन सर्वत्र भूमण्डले व्याघ्र साम्राज्यम् अस्ति ब्रह्मचर्य रूपाधारशीला नाशसति कामं किद्यपि प्रयत्नं कुरुतः विश्वस्मिन् शान्तिर्वस्थिता न भवितः। वैदिक संस्कृति कथ्यति मानव परिष्कारेण समाजस्य ततो विश्वस्य च राष्ट्र परिष्कृति सिद्ध्यते वैदिक संस्कृतिरेव मानवः वसुधैव कुटुम्बकं सर्वासां मित्रं भवन्तु इत्यादि शिक्षति नान्या संस्कृतिः ततो गृहस्थोऽपि वैदिक्येव समानजस्य सन्तनोति गृहस्थोऽपि वानप्रस्थमुपैत्य इन्द्रियाणि विषयेभ्यः वारितुं प्रयत्नमादते यतोचित् जगत के मनो हि येनेति भावना तस्य पुत्र नृत्यति ततो संन्यास आश्रम प्रविश्य सत्योपदेश वाला जगत कल्याणमाचरन् उर्वारुक्मी बन्धना मृत्योर्मोक्षेमामृत इत्यादि प्रार्थयन् अमृतत्व विन्द्यते इत्यमेव वैदिक जीवनस्य यस्य भावे सर्वत्र टका धर्मश्टका कर्म टका हि परमं पदं यस्य पार्श्वे टका नास्ति हाटकं टक टकायते इत्यादि टकाव मेदार्शं मानव जना ईश्वर मनान मैया सबसे बड़ा रुपया अयम निजा परोवेति सिद्धान्तमशित्य काम क्रोध लोभ मोह आत्मा के पंगे लिप्ता सन्ति एतेषामर्थं समुदार्थं वैदिकी संस्कृति धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्। वस्तुतः वैदिक संस्कृति सर्वप्रथम स्त्री ब्रह्म बभूवितः इत्युद्घोषन् नारी सम्मानयति अपि च यथायां वाचं कल्याणम् आवदानि जनेभ्यः इत्यादि डिड्डीबकी मानव मातृभ्यः शिक्षाधिकारं प्रयच्छन्ति। वैदिक संस्कृतौ कृतौ एव समेषां पंच महायज्ञविधानमस्ति इयमेव माता भूमि पित्रो एवं पृथ्वीभ्यः वयं राष्ट्रजगृह्यामः पुरोहिता माध्यमेन परिष्कारं करोति
वैदिक काले नलिनादि विज्ञानिकैः रामसेतु पुस्तक विमानादि निर्मितम् कोटिशानां वर्षाणां पर्यन्तं रामसेतुवत् तिष्ठते। आधुनिक युगे कश्चित् दृक्याद् अभियन्ता भूत्या एतत् दृढसेतु निर्भयात्। वैदिकी संस्कृति चरक माध्येन मानवान् चिकित्सा धनुर्वेदेन सपत्न्यभिस्त्रायते। यजुर्वेद द्वारा शिल्प गणितं शिक्षयति, सामवेदेन च गृहनृत्यम् आदि शिक्षयति। अति किं कथ्येयम् वैदिक संस्कृतिः मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कान्तेव चाभिर्मत्पनीय खेदं चेता प्रसायति शान्ति सुखं वित्नुते किं न प्रसादयति कल्पलतेव चेयम् इति ओम शब्द।